Assalamu alaikum. Welcome to Media. This is your host Umar Tariq. In this video, we will be talking about how to prepare award-winning research presentations. So, why listen to me, right? Who am I to tell you कि award-winning presentations कैसे बनाते हैं? क्या मैंने खुद कभी कोई award लिया है? So, just to prove that, let me share some of my achievements. So, in first year of my training in June 2014, I got first position for best poster presentation. This was an annual competition between Yale University, St. Mary's Hospital, Waterbury Hospital, and it was their annual research day. So I got this first position for the best presentation there. Uske baad, where I did my radiology residency training, I consistently every year I got a research award for research. 2019 में जो last year था मेरी training का I got a first position. 2018 में I got third. पहले साल जब मैंने present किया था I got second position. And what is kind of important is कि this annual competition is actually among all the specialties, all the residents and all the fellows at the campus. And I was the only trainee to win this competition every year that I participated. Also, Pennsylvania Medical Society, wahan pe I presented 3 years in a row. And, I got first position for my presentation in 2015, second position in 2016, third position in 2017. And, again, this competition is among all these specialties, khali radiology ka ya khali medicine ka nahi. This annual competition is among all the specialties, all the residents and fellows in the entire state. And I'm the only trainee in the history of Pennsylvania to win this competition 3 years in a row. So uske baad, at the time of my graduation, I was presented this award by RSNA, Radiological Society of North America, which is the biggest society of radiology pretty much in the entire world. And they gave me their biggest research award that's presented to trainees. So why is this important? I think it's important because to be consistent. देखो कोई एक award नहीं लिया, दो नहीं लिया, तुक्के से नहीं ले लिया, right? There was something that I was doing right, and I was consistently doing that again and again and again from 2014 to 2018. Her presentation में, her PowerPoint presentation, her poster presentation, I was doing certain things right. So those things are the ones I will be sharing with you guys in this video. So consistency is key. दूसरी चीज आती है कि be unique and innovative. तो उसके लिए it's very important कि आपको PowerPoint अच्छी तरह यूज करनी आती हो, PowerPoint के साथ प्ले करना आता हो, एनिमेशंस बनानी आती हो, डिफरेंट थीम्स करने आते हो, डिफरेंट आपको डिजाइन्स के साथ प्ले करना आता हो. तो PowerPoint आपको जितनी अच्छी आएगी उतना अच्छा आपका पोस्टर बनेगा, उतनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उतनी कॉन्फिडेंटली आप प्रेजेंट करोगे. और दूसरा देखो, दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मी, or it is more for you so that you can do the same thing. देखो मुझे कोई special courses नहीं किए, मैंने कोई special किस्म का कुछ नहीं किया, बस I was at Stanford University. I saw how the people at Stanford present, how people at UC San Francisco present, how people at Hopkins present, at Yale University present. So I was fortunate that as a medical student, I was able to go to these places, or even as a research fellow, I had access to the presenters from Google. बिल्कुल साथ ही हमारा होता था. Stanford University के, तो I saw people from Google and Facebook present their stuff. So I knew how you can make an immediate impact just by your style of presentation. और जब आप present कर रहे हो, तो it is not about you, it is more about what you're presenting and how you're presenting it. So in order to help you guys understand कि भाई presentations कैसी बनानी चाहिए, जिनको आपको award मिलता है, तो I will show quickly a couple of presentations. Hopefully that will give you some idea. What I've learned is कि I can tell you guys ये करो, लेकिन जब तक मैं उसे exemplify नहीं कर रहा, आप लोगों से examples share नहीं कर रहा कि कैसे करना चाहिए, समझ नहीं आती. So I'm going to quickly go over a few of my presentations. So this was a presentation I think I presented at Geisinger Research Day. I got first or second prize for it. So let's read about it. Comparing fatty meal and intravenous cholecystokinin CCK infusion to stimulate gallbladder for calculating ejection fraction. काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, कुछ समझ नहीं आई, राइट? तो जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा होता हूँ ना, मेरी कोशिश ये होती है कि
अगर एक 6-7 साल का 8 साल का बच्चा है तो उसको आपकी प्रेजेंटेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इट शुड बी फॉर डमीज, राइट? यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्ट्रेट अवे डिग इनटू के what was the study design and all that. लेकिन you need to educate your audience, especially अगर आप देखो किसी बहुत ज्यादा सब स्पेशलाइज्ड कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, अगर इफ आई एम गोइंग टू न्यूक्लियर मेडिसिन की कोई सोसाइटी में, तो माय प्रेजेंटेशन विल बी वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू इफ आई एम गोइंग टू मेडिकल सोसाइटी जहाँ पे मेडिसिन के लोग बैठे उन्हें कुछ नहीं पता, या इफ देयर आर मेडिकल स्टूडेंट्स इन द ऑडियंस, तो in that case my presentation will be very different. So this was general, सारे residents थे, fellows थे, attendings थे, not specifically nuclear medicine के लोग थे, तो this was very simple in that way. So let's say, you generally start talking with there are no disclosures that you have to disclose financial. अब यहाँ पे I said let's start with background. Starting with the background, whenever we eat any kind of fatty meal in the body, which could be any of this, our body produces, our body gets the fat in the bowel. That fat would stimulate the production of CCK, cholecystokinin, which would then stimulate the receptors of the gallbladder and cause go to the sphincter of Oddi. As a result, there will be bile that will be flowing from the gallbladder because these receptors have been stimulated and the sphincter of Oddi has relaxed. So the bile is going to flow, which is going to help with the digestion of this fat. So, okay. Now, how do we do a HIDA scan? We give the patient a radio tracer. That radio tracer is taken by the liver. Yep. Then that radio tracer goes to the gallbladder. When it goes to the gallbladder, we call that time for visualization of gallbladder activity. Then that radio tracer flows from the gallbladder. Let me show you the animation again. So it flows from the gallbladder into the small bowel like that. I just did the school animation. I thought it would be easier for people to understand. Then I gave the patient exogenous CCK. That exogenous CCK, what does that do? It stimulates the gallbladder receptors and causes relaxation of sphincter of Oddi. It's pretty much the same thing as endogenous CCK. And then as a result, that radio tracer, which was already in the bowel, in the gallbladder, will flow from the gallbladder into the bowel. Okay. And then you measure the remaining gallbladder radio tracer activity afterwards. The difference will be, or the ratio of these two measurements will be the ejection fraction. If this number is less than 35%, you call that low ejection fraction. Why is that important? It shows gallbladder dyskinesia or chronic cholecystitis. If it is high, it shows hyperstimulated gallbladder or biliary hyperkinesia. So how did we start? There was a nationwide shortage of exogenous CCK. So we said, okay, let's use a fatty meal. So we started using Reese's peanut butter cups as a fatty meal to stimulate gallbladder contraction for evaluation of gallbladder ejection fraction as part of the HIDA scans. So now we aim to compare the precision and accuracy of the gallbladder ejection fraction measured after stimulation by both methods. अब ये देखो एक और चीज़ I want to add here कि यहाँ पे आप देखो कि ये मैंने यहाँ पे एब्रीवेट कर दिया पीनट बटर कप को पीबी, फैटी मील को एफएम, गॉल ब्लैडर को जीबी, गॉल ब्लैडर इजेक्शन फ्रैक्शन को जीबीईएफ, हाइडा स्कैन हाइडा. You can always do that. Abstract करो, रिसर्च पेपर लिखो, पोस्टर करो, जो भी है, you can always do this. एक और कूल ट्रिक ये है कि अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो यहाँ पे जाके लेजर पॉइंटर पिक कर लो, तो और यहाँ अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो कमांड एल, और मेरा ख्याल है विंडोज पे कंट्रोल एल है, तो यू कैन ऑलवेज पॉइंट विद अ पॉइंटर फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर. यू डोंट नीड अ लेजर पॉइंटर, और वो आपकी जितनी भी अगर मल्टीपल डिस्प्ले भी हो रहा है आपकी स्क्रीन पे भी नजर आएगा और देखने वालों को भी नजर आएगा. सो अनदर कूल थिंग. So moving on, let's see. So again, now I said we kind of changed the process. Now we give the patient fatty meal, which is peanut butter cups, which provides the fat. Now that fat results in production of the endogenous CCK. That endogenous CCK will do the same thing. Our inclusion criteria was dates from this range. Exclusion criteria was patients with poor, low or high ejection fraction.
Then I start talking about the patient population. Okay, we got 106 patients. अब यहाँ पे देखो, I talked about this in my, I think, that other video. Okay, we had 47 patients. लेकिन important बात ये कि mean दी है और 2 standard deviation range दी है. So 2 standard deviation below mean और 2 standard deviation above mean. इसी तरह यहाँ पे भी बताया है कि भाई इस पॉपुलेशन को, तो हमारे यहीं पे हमने बता दिया है स्टडी डिजाइन में कि 106 पेशेंट्स थे, 47 को सीसीके मिला था, 59 को हमने फैटी मील पीनट बटर दिया था. स्टैटिस्टिक्स में हमने बता दिया स्टूडेंट ईट एफ टेस्ट थे. क्विकली मोर अबाउट पेशेंट पॉपुलेशन हमने बता दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल द अदर स्टफ. अब यहाँ पे देखो ये चीजें ना, मैं अब देखो पिछली साइड को देखते हैं. It was too boring for you guys to read and understand. It was too complicated and challenging for me to present it, right? Because there are lots of numbers, lots of stuff. अब ये देखना इस स्लाइड में ना, I am going to talk about कि अच्छा जो मीन था ना, आफ्टर जो फैटी मील ग्रुप था उसमें मीन जो था वो 54 था. ठीक है. अब ये जो बेल कर्व होता है जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो, वो मैंने पूरा बेल कर्व बना के दिखा दिया कि मीन 54 था. 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो रेंज थी वो 30 से 78 थी. ठीक है. अब इसमें मैंने कहा सीसी के ग्रुप. अब ये देखो, रेदर देन जस्ट राइटिंग इट, मैंने विजुअली उसको रिप्रेजेंट किया, कलर कोड इन डिफरेंट कलर कि यहाँ पर 61 है. अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वाज 7%, ये ग्रीन में आ गया. तो इस सारे को पढ़ने की बजाय इसको समझना कितना इजी है, क्योंकि चारों डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, और हर एक को सेपरेटली एनिमेट किया हुआ है. लेट्स गो थ्रू दिस अगेन. यू नो, मीन ये है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज ये है. अब ये जो सीसी के ग्रुप आ गया उसमें ऐसे है, उसका बेल कर्व वैसे, और मीन का, अब हम मीन का डिफरेंस लेते हैं तो वो 7% यहाँ पे आ गया. और it was statistically different, significant student t-test पे it was less than 0.01. बाकी इसी तरह मतलब I'm just showing के जो variance थी उसमें कोई इतना फर्क नहीं था by both methods. It was similar precision. ये देखो यहीं पे, so range was similar. So this is a complicated slide again, right? इसमें ये है कि what I'm saying is कि जो high ejection fraction थे जिन लोगों का, which was 26% of the CCK group, but fatty meal में they were only 4% of the group, and we need to explain that. Why is that? So I said, okay, possible explanation is that hyperstimulated gallbladder biliary hyperkinesia might have an increased density of CCK receptors in response to CCK stimulation, which cause the gallbladder to clamp down intensely and falsely elevate the gallbladder ejection fraction. If this is true, fatty meal stimulation mimics the normal physiological response better than CCK stimulation and could prevent this false increased gallbladder ejection fraction. और यहाँ पे देखो ये 1 minute डाला हुआ है और ये इसका रेफरेंस नीचे दे दिया पूरा. ये एब्स्ट्रैक्ट था जो कि सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में प्रेजेंट हुआ था. So कितना मुश्किल है ये चीज समझ आना. It's very challenging, especially for me. किसी बच्चे को बता रहे हो उसको समझ नहीं आएगी, राइट? तो अब इसको विजुअली करते हैं. लेट्स से कि ये एक पेशेंट है जिसमें हाइपर स्टिमुलेटेड गॉलब्लैडर है, बिलियरी हाइपरकाइनेसिया है. ठीक है. तो वी विल गो विद दैट. लेट्स से दिस इज अ नॉर्मल पेशेंट. आप और मैं हैं तो हमने इस तरह लेट्स से 6 रिसेप्टर्स पढ़े हैं. अगर ये एक पेशेंट है बिलियरी हाइपरकाइनेसिया का, हाइपरकाइनेटिक हाइपरस्टिमुलेटेड गॉलब्लैडर का, तो ये देखना ये जो रिसेप्टर्स हैं इसमें ये आर्टिफिशियली ज्यादा हो गए हैं, अप रेगुलेशन है. As a result, a standard dose of exogenous CCK will be causing hyperstimulation because of upregulation of receptors because of increased number of receptors. अब इसी पेशेंट में जब हम फैट देते हैं तो these are chronic undersecretors of endogenous CCK, which is balanced by the upregulation of receptors and will result in optimal stimulation. Thus, it does not cause falsely increased ejection fraction. It's again challenging point to understand, but hopefully it's easier for you to get that, to understand this concept reading this slide versus visually इसको. अगर आप देख रहे हो अच्छा चलो ये अपरेगुलेशन दिखा दी रिसेप्टर्स की, यहाँ पे दिखाया कि स्टैंडर्ड डोज है वो काफ़ी बड़ी है. अगर हम फैटी मील दे रहे हैं तो these people are chronic under secretors, तो इनमें स्मॉल डोज डिक्रीज हुई, secrete हुई of endogenous CCK, which is balanced by the upregulation of receptors. As a result, there will be an optimal response. तो यहाँ पे दोनों को दिखा दिया कि ये फैटी मील स्टिमुलेशन का पाथवे था, ये आपका एक्सोजेनस सीसीके जो आईवी दे रहे थे उसका पाथवे था. एंड दिस इज द ग्राफ. यहाँ पे कंक्लूड कर दिया मैंने. और एट द एंड आई एंडेड अप विद like a funny note that this study is not sponsored by Reese's peanut butter cups or questions, you know.
Acha, this was another presentation that I presented at Geisinger Research. They gave me the first position for this presentation. So let's quickly go over this. So this is we're going to talk about outcomes of type 2 endoleak treatment using Onyx. So we were kind of limited because Geisinger made this rule that the presentation has to be made in this format, like using this theme. तो हम लोगों को यही theme use करना था. Anyhow, let's read about this outcomes of type 2 endoleak treatment using Onyx. अगर आप लोगों को पता नहीं है कि एंडोलीक क्या चीज है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कितनी टाइप्स होती हैं एंडोलीक्स की, तो आपको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा. एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू ऑलवेज गो विद कि भाई आपकी जो ऑडियंस है उसको हर चीज नहीं पता. इसे कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज कि आप समझते हो कि जो कुछ आपको आता है आपके इर्द गिर्द लोगों को भी वही आता है. इट्स अ कॉमन नॉलेज. नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आता. एंड इट ऑलवेज हेल्प्स. इवन अगर आप किसी बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस भी जा रहे हो ना, तो मेक योर प्रेजेंटेशंस डमी प्रूफ, बिल्कुल बेसिक, कि किसी फर्स्ट ग्रेडर को, किंडरगार्टनर को आपकी बात समझ आ जाए. So in this one, let's see, I again started with disclosures, none. Then बैकग्राउंड हम कहते हैं जी अच्छा चलो ये एक नॉर्मल बंदे की योट है, मेरी आपकी योट है. ये बंदा था, ये स्मोकर था, इसको हाइपरटेंशन थी, इसमें एओर्टिक एन्युरिज्म आ गई. अब अपने मैंने एक छोटी सी एनिमेशन बना के इसको बता दी डिफरेंस के एओर्टिक एन्युरिज्म आ गया इसमें. अब इसमें जो है वैस्कुलर सर्जरी ने आके एक ईवार करती है विच इज एब्डोमिनल एंडोवैस्कुलर एन्युरिज्म रिपेयर. वो एक बेसिकली स्टेंट डाल देते हैं इसके अंदर. इसकी वजह से अब दो काम हो सकते हैं. क्या होगा कि अगर स्टेंट ने सही काम किया है तो ये जो एन्युरिज्म है दिस विल कोलैप्स लाइक दिस, राइट? और इट विल आइदर स्टे स्टेबल और श्रिंक, और the surgery would fail and it will keep on getting bigger. ठीक है? These are the two possibilities. In the situation in which it keeps on getting bigger, we call that situation endoleak. अभी देखो इतना complicated एक concept था जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता. मैंने इन लेस देन मिनट आपको एनिमेशंस के साथ समझा दिए, आपको समझ आ गई. अब मैंने बता दिया कि 6 टाइप्स होती हैं एंडोलिक्स की. ठीक है, उसमें से ये टाइप 2 होती है जिसमें कोलैटरल वेसल आ जाती है और वो इस एनरिज्म के अंदर ब्लड डाल रही होती है. तो दैट्स व्हाई इट्स इंक्रीजिंग इन साइज. सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द टाइप 2 endoleak in which there is a collateral vessel supplying the blood to the aneurysm. Let's keep on. So now let's talk about the endoleak briefly. The most common indication for reintervention after EVAR of abdominal aortic aneurysm is endoleak. It indicates continuous leakage of blood between the endograft and the wall of the aneurysm sac, resulting in progressive enlargement of the aneurysm sac and increased risk of rupture. अब देखो, if this was my first slide, तो again it's too boring. हालांकि मैंने colors different किए हुए हैं, important जो stress करने वाले points हैं उस पे contrast देने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रही, right? Because I was able to present that with the animations background में, तो अब आपको ये बात भी समझ आ जाएगी relatively easily. और अगेन यहाँ पे मैंने 1 लगाया तो मैंने यहाँ पे 1 उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है. अब वी विल टॉक अबाउट टाइप 2 एंडोलीक. ये देखो यहाँ पे मैंने रेगुलर यहाँ पे एक बस एरो लगा के मैंने आइडिया दे दिया कि दिस इज टाइप 2 एंडोलीक. और अगेन जितने भी रेफरेंसेस 2 3 4 वो मैंने यहाँ डाल दी. तो टाइप 2 endoleak, it's the most common type of endoleak and results from persistent retrograde blood flow into the aneurysm sac from one of the more side branches. The current consensus is that patients with persistent type 2 endoleak should be treated to prevent the increased risk of rupture. So what are the treatment options for persistent endoleak? You can do a translumbar embolization. अभी यहाँ पे मैंने ये दिखा दी है. Or you can do a transarterial embolization. Translumbar का मतलब है कि जिस तरह आप LP करते हो उसी तरह एक सुई डाल के you get access and you do that. Transarterial is you go through the artery, put a wire and try to get into this area from the arterial side. Embolization can be performed with very symbolic agents using metallic coils, glue, and onyx. There is no consensus on which type of embolization we should use. For the purpose of this presentation, we're going to focus on onyx. अब देखो मैंने next slide में मैंने एक और duplicate की slide, next slide में मैंने उसको color code करके red कर दिया so that it stands out. देखो जिस तरह मैंने अपनी CV वाली talk में भी कहा था, your main job is to make sure that it is easier for audience, reader, इंटरव्यूअर, जो भी बंदा आपकी सीवी पढ़े या आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखे उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इजीली बात समझ आ जाए और इजीली पढ़ी जाए. तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस स्टफ इन अ डिफरेंट कलर और यूजिंग एनिमेशंस. So for the purpose of this presentation, we aim to evaluate onyx for embolization of type 2 endoleak. अभी देखो ये मैंने type 2 जो endoleak है
उसको I have defined, I'm pretty sure somewhere before. यहाँ पे ये देखो type 2 endoleak T2E. So now because I already defined it, I can pretty much you know use this T2E here. We aim to evaluate onyx for embellishment of type 2 endoleak after endovascular repair of EVAR. Endoleak repairs using onyx performed from 2010 to 2016 as a part of clinical management retrospectively reviewed methods में. अब यहाँ पे देखो, you need to define all these terms before you use anything in your paper and your presentation. You need to define it. और अगर एप्लीकेशन करना है तो उसको जहाँ पर पहले सबसे पहले आए ना आपके एब्स्ट्रैक्ट में, आपकी पावर पॉइंट में, आपके पेपर में, वहीं पे डिफाइन करो. तो टेक्निकल सक्सेस TS, क्लिनिकल फेलियर CF, क्लिनिकल सक्सेस CS. सो यही I won't read all this, but anyhow, you get the point. I can read all this, but basically जो काम की चीज़ है उसमें मैंने रेड नहीं कर दिया. स्टैटिस्टिक्स का मैंने बता दिया है कि क्या किया था, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या थी, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया था, टेस्ट कौन सा यूज़ किए थे. अब टेक्निक का मैं बता रहा हूँ. अगेन I genuinely believe कि one picture is worth 1,000 words. So basically, I'm just saying patient is placed prone on the CAT scan table under general anesthesia. Access is obtained to the aneurysm sac via translumbar approach. जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है. अब ये पेशेंट लेटा हुआ है, हम साइड से सुई मार के उसके एनोरिज्म के अंदर आ रहे हैं. This is the graph. So a guide wire is then advanced through the needle into the aneurysm sac. अब यहाँ पे मैंने एनिमेशन थोड़ी सी डिफरेंट करके ये गाइड वायर दिखा दी है. A needle is exchanged over the wire for an acoustic dilator introducer system. यहाँ पे थोड़ा अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन this is the acoustic introducer system. This is the graft. The patient is then transferred to the fluoroscopy suite where 4 French catheter is advanced through the introducer sheath. This one into the aneurysm sac. और ये देख लो, ये acoustic introducer sheath है. This is 4 French Compi catheter, and then I have the echelon micro catheter going through the Compi catheter. The aneurysmal sac is then probed cephalad and the cephalad and caudal directions, utilizing contrast evaluation to look for feeding or draining vessels. Mentioned that he basically I wasn't able to do good animation here. Like, and I just tried to explain the same thing कि इसका मतलब क्या है पूरी बात का, कि catheter को मैं ऊपर नीचे move कर रहा हूँ to see if I can find a leak, and then embolization is performed using onyx. ये जो सारा काला काला आपको नजर आ रहा है ना, that is onyx, and I'm doing it again in the cephalad and caudal directions. अगर कहीं leak नजर आती है तो वहीं पे, वरना I will just fill the sac. And after embolization, all this is removed, all the catheters and all. अब अगेन देखो, यहाँ पे मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सबको कलर कोड किया रेड में. सो टोटल ऑफ 10-13 पेशेंट्स वर यूज्ड. अगेन मीन एज मैंने दिया यहाँ पे. रेंज चूंकि ये थोड़े पेशेंट्स हैं, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गिव रेंज एज वेल, मीन और रेंज टू स्टैंडर्ड डेविएशन. Mean interval was this. No major post-procedural complications. Mean volume of onyx use was this. Mean diameter pre-procedure and post-procedure at the time of, I think, 3-6 months follow-up was this. Technical and clinical success was achieved in all patients. 100% clinical success rate with the trend towards decreased diameter and improved volume post-treatment. However, it did not reach statistically significance, probably related to the small sample size. अब ये देखो यहाँ पे ना, जब हम statistics की बात कर रहे थे, we said के 0.05 is going to be our number for statistical significance. You can make it any number, the lower the better. हमारी situation में that number came out 0.11. So we didn't artificially make it. We didn't define के भाई just to achieve statistical significance कि हम अपने स्टडी के स्टार्ट में 0.2 को कह दें या ऐसा कुछ. जो नंबर है वो है, और उसको उसी तरह अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना है. कोई डोंट कुक अप डाटा एवर, डोंट मेक अप स्टफ, बी ऑनेस्ट. अब यहाँ पे हमने कह दिया ठीक है 100% सक्सेस रेट थी, लेकिन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं आई. The way we address it, there was a trend towards statistical significance. However, it did not reach it because of our small sample size. Limitations आ गई. This was a retrospective study, single institution, small sample size. Future directions, prospective multi-center studies हम कर सकते हैं with a larger sample size to achieve the statistical significance. And again, ये देखो conclusion जो है, अगर आप मेरे पढ़ रहे हो, you wouldn't see anything, you just see 100% success rate. ठीक है, बात समझ आ गई. Or I can read all of this and pretty much emphasize the same fact. All right, these were a couple of my presentations. I've done a lot more, लेकिन hopefully आपको इन दो presentation से थोड़ा बहुत idea हो गया होगा कि what do you need to do. देखो, the idea is you need to tell people, you don't need to tell people of what you want to tell. You need to show them what you want to tell. तो अगर वही चीज़ आप image से, table से, animation से बता दोगे,
तो ज़्यादा अच्छी तरह उन्हें समझ आएगी, ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको पढ़ के रीड करके बताओ। कोशिश करो मिनिमम वर्ड्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस हों, एनिमेशंस हों। Be very creative with PowerPoint. Get yourself comfortable with the animations. Like I said, use images, tables, graphs extensively. Use different colors to emphasize facts. अगर किसी बात पे जोर देना चाहते हो सकता है बोलते हुए आप ना कर सको, तो उसको एक डिफरेंट कलर में यूज़ कर दो, बोल्ड में कर दो। और फोकस शुड बी टू मेक द प्रेजेंटेशन एंड रिजल्ट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जितना मुश्किल होगा ना आपके ऑडियंस के लिए आपके रिजल्ट्स को समझना, आपकी स्टडी डिज़ाइन को समझना, उतना मुश्किल है आपको उनको अप्रिशिएट करना, क्वेश्चंस पूछना। उतने वो आपसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, उतनी आपकी प्रेजेंटेशन एंगेजिंग होगी और उतना लाइकलीहुड है आपको अवार्ड मिलने का। ठीक है, चलो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, रिंग ऑन टू द नोटिफिकेशन बेल, एंड लाइक आई ऑलवेज से, नेवर गिव अप, नेवर लूज होप। बाय।